Let us continue with our HTML scripting. In the last lecture, we were discussing about the tables, how to create tables in HTML, and then we saw the different kinds of attributes that can be associated with the table tag. And now in this lecture, we are going to discuss about what is a hyperlink and how we can insert images into HTML. Okay, so I hope all of you are practicing these things. So after today's lecture, I'm going to give you 1 week time to create HTML pages, right? So then we will evaluate the web pages that you are going to create. So what is a hyperlink? A hyperlink, as you know, that a website is a collection of pages. So before we try to understand what is a hyperlink, so first of all, see what is a website or a portal. So what we have created so far is how to create a web page. एक web page कैसे बनता है हमने वो देखा है. Now, basically, if I'm talking about a web portal or a website, it is a collection of web pages, and I can move from one page to another. तो जनरली क्या होता है कि देयर इज अ डिफॉल्ट वेब पेज जो खुलता है जब हम लोग एक वेबसाइट को ओपन करते हैं. For example, if I say www.ptu.ac.in, we do not remember all the links and we are not able to directly move on to any link. तो हमें एक बाय डिफॉल्ट सर्वर के ऊपर एक वेब पेज पड़ा होता है. जब हम उसको खोलते हैं तो उसका एक डिफॉल्ट जो वेब पेज है वो ओपन हो जाता है. So at one time, how many you can say pages can be displayed in a browser? That is only a single page can be displayed at one time. आप टैब्स बना सकते हैं, मल्टीपल टैब्स में मल्टीपल वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं, बट इवन देन ओनली वन टैब कैन बी एक्टिव एट वन टाइम. Now let us suppose that you wish to move to some other web page in the same website. Right, for example, if you open ptu.ac.in and then you want to move towards the syllabus page. Now there comes the concept called the hyperlink, which is given on a web page and that lets you jump to another page with the help of the URL. तो आप एक उस वेबसाइट में उस जो जहां पर पड़ी है उसका एक URL डिफाइंड है. आप उसी URL के अंदर एक अलग वेब पेज को खोलना चाहते हैं. ठीक है, तो एक स्पेस है. सो सर्वर इज अ स्पेस विद इन दैट स्पेस आई वांट टू मूव टू लेट्स से सम अदर web page, and you can also move to external link also. मतलब आप एक वेबसाइट से फॉर एग्जांपल ptu.ac.in वहां से क्या मैं UGC की वेबसाइट खोल सकता हूं. उसके नीचे अगर एक एक्सटर्नल हाइपर लिंक दिया है तो डेफिनेटली यू कैन जंप फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट एज वेल. ठीक है, सो मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर इज कॉल्ड नेविगेशन. You can also use an image in HTML to act as a link. तो लिंक जो हाइपरलिंक है वो जरूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट फॉर्म में ही होगा. Some of the links can also be given as the images. So you just click on that image and again you can navigate from one page to another. ठीक है, तो जब आप एक इमेज के ऊपर क्लिक करते हो तो यू डिफाइन एन एरिया विच इज नोन एज अ क्लिकेबल एरिया. तो जरूरी नहीं है कि पूरी इमेज पर ही क्लिक करने से वो हाइपरलिंक जो है वो एक्टिव होता है. कई बार आप एक इमेज का एक सिलेक्टेड पोर्शन जो है उसको हाइपरलिंक बना सकते हैं. तो विद इन सिंगल इमेज यू हैव वन हाइपरलिंक. अगर आप उस एरिया के ऊपर कहीं पर भी क्लिक करते हैं देन यू कैन नेविगेट टू सम अदर पेज. ठीक है, सो यू कैन मेक मल्टीपल लिंक्स यूजिंग अ सिंगल इमेज. तो आप सिंगल इमेज के अंदर ही मल्टीपल लिंक्स भी बना सकते हैं. एंड नाउ फ्रॉम one concept called hyperlink, that is a text link, then to the image link, the third concept that we will see today is called the frames. Now what are the frames? A frame is just like a frame set in HTML that can be used to create multiple frames and each frame can then be used to display individual document. तो यानी आप
आपके एक पेज के अंदर ही हम लोग एक मल्टीपल सेक्शंस बनाना चाहते हैं, तो we can break that one page into multiple sections with the help of a frame set. राइट, सो हम एक पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, देन वी कैन हैव दोज 4 सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंडिविजुअल फ्रेम्स. दीज फ्रेम्स कैन ऑल्सो बी लिंक्ड. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड एंड विच आर द टैग्स दैट यूज. So which are the tags that we are going to use to implement these concepts? So now we are going to begin with it. So I request everyone to be ready with their notes so that you can note it down at the same time that which tags we are using. So first of all, how to create a hyperlink? A hyperlink can be created using the A tag. So please note this down. In case if you want to create a hyperlink, the tag that you are going to use is called the A tag. The A tag also has an end tag. So obviously, if I want to specify or create a hyperlink, then this is how I'm going to do it. This is called the start tag, and this is called the end tag. Right. You can specify the text to be displayed for the hyperlink. The address of the hyperlink can then be defined using the h reference attribute. So that means अगर आप एक let us say A tag यूज करते हैं, तो A tag के अंदर जो आप लिख रहे हैं, that is not the address. That is what should be displayed on the web page. For example, if I want to give the names of the departments like examination, academics, accounts, then those values can be given between the tag A and the end tag of A. But how to define कि आप जाएंगे कहां पर? If I click on this, that for that you have to give the value for the h reference attribute. और वो कहां पर देनी है? You have to give it inside the A tag, जहां पर आप बता रहे हैं कि hyperlink will be formed. So let us see an example of the same. So this is one hyperlink that we have created. This is the syntax. This is not the actual example. So this is where the text will be displayed. Now this text to be displayed is within the A tag and the end tag of A. और उसका एड्रेस जहां पर आपको जाना है, that is given as the h reference inside the A tag. So let us have look at some of the facts that how you come to know that this is a look of a hyperlink. The color of the link that you have not accessed once on a web page after loading the web page is blue in color. So that means अगर आप एक वेबसाइट खोलते हैं, आपने उसके किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया है, तो that link will initially be of blue color. The color of the link जिस पर आपने एक बार क्लिक कर दिया है, that will become purple in color. And the link that is currently active is displayed using the red color and it is underlined. As you move the cursor on the hyperlink, ना जब आप hyperlink के ऊपर अपने cursor को move करते हैं, then the shape of the cursor also changes to the hand. Normally by default the shape of the cursor is an arrow. लेकिन जैसे ही आप उसको एक hyperlink के ऊपर लेकर जाते हैं, then the shape of the cursor also changes. That gives you an indication that ये जो आप access कर रहे हैं या जिसके ऊपर hover कर रहे हैं, that is a hyperlink. Now the next is local or internal link. What can be a local or an internal link? Local और internal link होता है ऊपर नीचे जाने के लिए within the same web page. For example, if I say that these are the links to the topics in the web page, तो स्टार्टिंग में उसके टॉपिक्स के नाम दिए होते हैं. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यू आर शिफ्टेड डाउन द वेब पेज. कई बार लिखा होता है टॉप पर जाना है, तो आप क्लिक करते हो तो यू आर रीडायरेक्टेड टू द टॉप ऑफ द वेब पेज. सो दैट मीन्स एक वेब के पेज के अंदर ही अगर आपको मूवमेंट करनी होती है ऊपर या नीचे, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लोकल और इंटरनल लिंक. जो हम हाइपर लिंक की बात करते थे या एक्सटर्नल लिंक की बात करते हैं, वो है इफ यू वांट टू मूव टू द अदर वेबसाइट और
to a different web page within the same website. So it refers to the link on some web page within the website that you are currently working on. In this case, you do not have to display an absolute URL or full address. Relative addressing can also be used. So what is relative addressing? Because uska path same hota hai. आई रिपीट, द पाथ इज सेम, क्योंकि एक सर्वर है जैसे www.ptu.ac.in, तो आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस वहीं पर पड़े हैं, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा पाथ बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस वेब पेज का नाम भी बता देंगे विच इज कॉल्ड द रिलेटिव एड्रेसिंग, तो इट विल मूव टुवर्ड्स दैट page. Global or external link, you can open some external link by specifying the full URL. अगर ptu.ac.in से मुझे किसी और वेबसाइट पर जाना है जैसे यूजीसी की, देन आई हैव टू गिव द फुल लिंक। एंड वन इज द लोकल लिंक, जैसा मैंने बताया आपको ऊपर नीचे जाने के लिए, उसके लिए आपको यूआरएल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, नाइदर फुल और नाइदर रिलेटिव। सो लेट अस have a look at a few more of the attributes that we can use with the A tag. Now, what is an A tag? A tag is used to specify the hyperlink. So there is one question, can we use images as a hyperlink inside the anchor tag? So while I am trying to define a hyperlink, the hyperlink can only be inside the anchor tag, that is right. So what we are saying is कि जब हम लोग इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम लोग इमेज बनाते हैं तो सबसे पहले हमें इमेज को इंसर्ट कैसे करना है, हमें सबसे पहले वो स्टडी करना पड़ेगा, एंड देन विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू कम एट अ लेटर स्टेज। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट आएगा या इमेज आएगी, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन हाइपरलिंक जो है दैट विल बी गिवन बाय द एंकर टैग ओनली, राइट। सो थिंग्स विल बिकम इवन मोर क्लियरर एज वी मूव डाउन, बिकॉज अभी तक हमने इमेजेस को इंसर्ट नहीं किया है, तो देर विल बी कंफ्यूजन टू द अदर यू कैन से स्टूडेंट्स एज वेल। So just moving down, जब images आएंगी, things will be clearer, and I will come back to your question once again. So a link is used to specify a web page to be opened when the same is accessed. The target attribute is used to specify the window or the tab where the new page will open. Some of the values of the target attribute are as follows. तो हम कौन सा attribute अभी study कर रहे हैं? We are studying the target attribute. Now target attribute ये बताता है कि what will happen if or when I click on the hyperlink. मान लीजिए वहां पर एक hyperlink दिया हुआ है that academics department or examination department. If I click on the examination department, where will the result of that will be shown? So one is underscore blank. Now what is the meaning of blank? Linked web page is opened in a new browser or a new tab. So that means the existing web page will continue to show, और जिस लिंक के ऊपर आपने क्लिक किया है that link will be opened in the new tab और new browser. इसका मतलब क्या है कि आपका एक नया एडिशनल जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा, पिछले वाला रिटेन रहेगा। सेल्फ मीन्स दैट द वेब पेज विल बी ओपन इन द सेम फ्रेम वेयर द लिंक इज, उसी फ्रेम के अंदर ओपन हो जाएगा। पेरेंट, द लिंक डॉक्यूमेंट इज ओपन इन द पेरेंट फ्रेम, एंड द लास्ट वन इज द लिंक डॉक्यूमेंट इज ओपन इन द नेम्ड फ्रेम। तो बेसिकली अभी आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी, वो इसलिए बिकॉज वी आर नॉट स्पेसिफाइंग और वी आर नॉट डिस्कस्ड व्हाट आर फ्रेम। जब हम वो डिस्कस करेंगे तो थिंग्स विल बिकम इवन मोर क्लियर। द नेक्स्ट इज अ बुक मार्क। यहाँ पर आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू फोकस अ लिटिल मोर ऑन व्हाट इज अ बुक मार्क। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर में बताया था कि कैन आई मूव अप एंड डाउन विद इन अ सेम वेब पेज, मतलब मैं एक वेब पेज के टॉप पर या एक वेब पेज के बॉटम पर जाना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूं। A bookmark allows the user to move to some random part of the same web page. So that means we are not moving to some other web page, but instead we are just moving towards some position in the same web page.
where the link is placed. It is used in case the web page consists of a large content. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं जहां पर आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलते हैं, तो वो ट्यूटोरियल्स दे आर सो लार्ज इन लेंथ दैट एवरीथिंग इज नॉट डिस्प्लेड एट वन टाइम। तो उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करना ही पड़ता है। तो क्या हम लोग उसमें बुकमार्क्स या लिंक्स दे सकते हैं कि मैं क्लिक करता हूं हाउ टू इंसर्ट एन इमेज यूजिंग HTML, मैं जैसे ही क्लिक करूं तो इट टेक्स मी टू द सेम टॉपिक, राइट? So you can create a bookmark using the ID attribute as follows. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक हेडर बना रहे हैं यहाँ पर, तो हम उसके साथ एक आईडी डिफाइन कर देते हैं, बुकमार्क नेम, सो वट एवर नेम दैट यू वांट टू गिव टू द bookmark and then whatever text that you want to display. ओके तो जब हम रेफरेंस देते हैं तो जनरली व्हाट इज द रेफरेंस? द रेफरेंस इज द यूआरएल और द एड्रेस वेयर वी वांट टू मूव। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि एंकर टैग के अंदर या ए टैग के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द bookmark where we want to move followed by the hash। तो इससे क्या होता है कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं जहां पर विद इन द सेम पेज हम ऊपर या नीचे जाना चाहते हैं। तो देर इज नो वे दैट वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर। Okay, so now it is time for you to look at an example. So we are going to discuss an example right here. So what I request is that all of you to please focus on this. So let us start. So this is HTML suggesting that we are going to create an HTML page. This is our first heading. The heading says sample script for hyperlink demonstration. So what we are going to do is we are showing a hyperlink demonstration. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने a tag यूज किया है। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द a tag। तो ये हमें ये बताती है कि वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। The name of the hyperlink will be IK Gujral Punjab Technical University, and within the A tag the H reference is equals to www.ptu.ac.in, and that is the end of the web page. So within this web page there's not much to discuss, so we will just see an example. I'll be back in within 1 minute, so please hold on, don't go anywhere.